this panel discussion which is aimed to discuss the representation of criminal lawyers in popular culture through the lens of bias. So, now I would like to request our director sir to please come on stage and present the honorable guests with the samplings for their auspicious presence here today. Jyotishi. Dr. Jyotishi is a managing partner at DMJ Law Firm, which is a leading business advisory and litigation law firm. He has excellent academic credentials and more than 18 years of experience in litigation. Please, a big round of applause for him. We also have Dr. Colonel A.K. Vashishta. He has pursued BA Honours Economics and LLB from Shimla. He has also pursued LLM and PhD in Law from Kartika University. Now we have with us Professor Dr. Anu. Big round of applause everyone. Dr. Anu is teaching law for 18 in New for past 13 years. She has done GIPS has been rated A+ by State Fee Regulatory Committee, a free committee of Government of City of Delhi. It has been rated highest, grading A by Joint Inspection Committee of Government of City of Delhi and GCS University since 2013 till date. It has been rated grade A by Academic Audit Cell of GCS University since 2011 till date. It has been ranked number 93 Pan-India by the Wall Street Investment Journal 2017. GIPS has also achieved 4-star ranking in IIC MOE ranking 2021. GIPS has been ranked as number 49 in top 150 B schools in India, 34th in top 100 private institutions in India, and 19 in top 20 North B schools for its MBA program by Times Business School Survey 2022. Also, GIPS has been rated as number 2 Pan-India for its BBA program by Times Business School Survey in 2021, 2019 and 2018. words enough. Now let's see what GIPS is actually all about with boots on ground. Let's please have the video. A promise is what you need. Light of creativity and music of humanity. Let us start the event with the Saraswati Vandana. फोकस क्यों नहीं कर रहा था? Now, with the blessings of Master Saraswati, let's move forward.
If the prevalence of lawyers in movies, television, literature, and even humor means anything, popular culture remains fantasized with lawyers. Our practices, our ethics, our professional conduct, and persona serve as a mind for image and narrative, a target for cultural critique, and a catalyst for expression. Not surprisingly, images of lawyers in cartoons, films, web series, televisions, and social media and literature offer unique opportunities to teach and explore professionalism. The proliferation of lawyers' images in popular culture provides an array of material ranging from career choice to particular actions and behavior. This panel discussion aims to elicit powerful responses about the morality, purpose, role, and identity of lawyers in addition to the traditional questions of legal ethics. Now, I would like to request respected Director Sir Dr. P.M. Johri to address the distinguished panelists and audience to mark the beginning of the event. Sir, please. A big round of applause, everyone. Which we are in really talks about it, and we will definitely be benefited by the discussions which we shall be witnessing. Thank you very much. Thank you, sir, for your kind words. Now I would like to invite Dr. Colonel A.K. Vashishta on the stage. He has pursued BA Honours Economics and LLB from Shimla. He has also pursued LLM and PhD in Law from Kurukshetra University. He is a retired colonel from Judge Advocate General. He is a former professor and dean in Maharishi Law School, Noida. He is also a member of International Council of Jurists London. Sir was also a peer reviewer for Geneva Convention 4. Presently, Sir is practicing advocate at Delhi High Court and Armed Forces Tribunal. Now we will request all the panelists to come on stage, and as soon as you are up above, we would like to introduce you to our audience. Now we have Dr. B.M. Jyotishi, who is an advocate at Supreme Court of India. He is a prominent lawyer. Presently, he is a managing partner at BMJ Law Partners, a leading business advisory and litigation law firm. Sir has excellent academic credentials and immense exposure in the field of corporate and commercial laws, GSTs, customs, arbitration, IPC, and business laws, indirect taxation, and provide legal support in all government inquiries, investigations, and sir has over 18 years of experience in litigation matters. He also serves on the board of governors, and over the years he has received many recognitions for his academic credentials and marvelous knowledge. Sir is also the honorary secretary of Indian Industries Association. Furthermore, he is also the founding member and the chairperson of an NGO named Jan Sarthak Foundation, which is working on pan-India basis. Please, everyone, a big round of applause if you have. Now, we would like to introduce our audience to another one of our esteemed panelists, who is none other than Professor Dr. Anu. Dr. Anu is a teaching faculty in DU for the last 13 years. She has done her PhD titled Right to Health, a critical evaluation of constitution and legislative provisions. She has published papers in peer-reviewed and index journals. She has presented papers in international and national conferences and also has published a book titled Right to Health, Women and Child Health by Lambert Academy Publishing, Germany, 2014. She is involved in teaching, academic and research activities very actively, and she is a member of various committees working for administrative works in the law faculty. Please everyone, welcome her with a big round of applause. Now, we would like to fire up the session with a question and answer round. Now I would like to request the panelists to please continue with the conversation on the esteemed topic. I would like to request Dr. Kaul A.K. Vashishta to come on the mic and please share his kind thoughts on the esteemed topic.
Good afternoon, everybody. First, lot of regards to the illustrious, the august panelists, Dr. Naraman and Dr. Jyotishi, Director Jyotishi, faculty and everybody. The subject which we have been called to discuss. English or Hindi? English language? Yes. Okay. Are we comfortable in English? Hindi? Yes, sir. Okay. What nice. So, it's a presentation of criminal lawyers and popular culture through the lens of bias. Ordinarily, when we talk about bias, we talk about the doctrine of bias. And incidentally, we have Dr. Anu here, who's an expert. When we had a discussion in the director's office, the first question that the first thing which I learned that she's an expert in administrative law, and to my mind, she would be the fittest person to express views on this subject. But well, as jurists and lawyers, we all are supposed to know what the doctrine of bias is. Now, looking through the lens of bias, incidentally, the lawyers have always been seen through the lens of bias. A lawyer is not a good person. That's where it starts. Vakeel hai bhaiya jara bach ke raho. But let me tell you, ladies and gentlemen, my personal experience of this profession, since I don't really know what could be that I could be the senior most as far as the law is concerned, because having done law, I passed my LLB in the year 1985, so it's quite some time. So, I always compare lawyers, you must all know this, and you must take this from me. Lawyers are like doctors, they are the social doctors, like the social surgeons. They remove all the bad things from the society. Remember that. When you start practicing, you must know that it's a responsibility cast upon each one of us who's qualified in law. यह हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा दायित्व है कि जो कुछ हमने लॉ के दौरान पढ़ा लिखा है, that will give you the first of all it makes you fearless. किसी भी डॉक्टर का, किसी भी सर्जन का निडर होना बहुत जरूरी है, because he has to remove a disease which the patient doesn't know. He can't do it by himself. And the other one is, once you are fearless, you have to be knowledgeable, so you have to read. I insist as a jurist, 3 words, read, read, read. Read a lot. And read. Make an overlap. I might be digressing a little bit from my subject, but I thought since I've got an opportunity to address students, sir, may I? There are more qualified people than me to address on this issue, but what I have done in my life and what I can share with you is why we talk about lawyers as not good people. Probably we do not understand them because we don't want to interact with them. जब तक आप किसी आदमी से वाकफियत नहीं करेंगे, आपको नहीं मालूम पड़ेगा वो कैसा है. As I told you, he's a social doctor. He removes the weeds out of the society. Start from what I remember. Cicero, we haven't known much about him, but yes, Abraham Lincoln, we have read his speeches, we have read his writings, and we have known about him. He was a lawyer. We have read a lot about, and you will be reading more when you start preparing for such exams, about Mohandas Karamchand Gandhi, popularly we call him Mahatma Bapu, a lawyer. We had Babu Rajendra Prasad, lawyer. We had Pandit Jawaharlal Nehru as lawyer. We have Dada Bhai Nauroji as lawyer. And among India as a young country, as far as this field is concerned, we have Sirbhai, H.M. Sirbhai, right? We have J.S. Khanna, we have K.K. Venugopal, who's a Solicitor General. Then we have the great Arun Jaitley, we have Mukul Rohtak. We have all those big names. They are from this profession.
Imagine the contribution all of them have made to this country, this society. Our Prime Minister, Atal Bihari Vajpayee, was a lawyer. Our first Prime Minister was a lawyer. So, there are two independent subjects as a matter of fact. The doctrine of bias and representation of the lawyers in criminal law. They are two different doctrines, they are two different pillars. They're two different colors as a matter of fact. It's very interesting, and I was quite taken aback rather that these two different colors which won't actually merge have been merged. The representation of criminal lawyers in popular culture through the lens of bias. Remember, ladies and gentlemen, when we talk about bias and criminal law, the element of bias is integral to the practice in criminal law. Whosoever represents the accused person, the whole society looks at that lawyer as a bad man. You would remember, probably you won't, but we do. When we lost our great Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, there were lawyers, there was a lawyer, and we all know his name, Mr. Ramjit Malani, and other lawyers, a team of them, who represented those who were accused of having shot at a then Prime Minister. The whole country sort of stood against them. And even the lawyer, they had difficult time. Similarly, many other incidents which happen in the society. Whosoever, now, for instance, we have the new acts like the Criminal Law Amendment Act, then we have the Prevention of Cruelty to Children Act, POCSO, right? So anybody who stands, who goes to protect that man who has committed the crime, would be looked at with a bias. You will have a very, very serious prejudice against that man. Oh, you are representing that accused. Right? Now, criminal lawyers, now who would? Now we have that famous principle of audio altrum partem. Nobody should be condemned and heard. Right? So we have part third dominated by that. So assurance of fundamental rights, the right to speech, the right to defend, Article 20, right? Prevention from double jeopardy, etc. You cannot be condemned without hearing your side of the story. So if you have, and this is the basic principle of natural justice. You cannot decide matters. ये जहांगीर का न्याय नहीं है. It's not one-sided. It's not ex-party decision making. Democracy doesn't entertain that. That's why our preamble itself says to ensure justice to everybody. And justice is what? Justice is what is not only done but also is seen to have been done. It should be just law. You could still go and plead your case, but in the criminal law, the procedures are so difficult. They are so complex and complicated. Without the assistance of the lawyer, you cannot help yourself. And whosoever helps the accused, at least the victim side of the society would look at the lawyer also as a person siding with the accused. And then we have, we are on the electronic media, we are so advanced on the media, the television, the WhatsApp group, the YouTube, everywhere. The media interjects and projects, as we say, media has its own trial. It starts its own trial, it starts accusing people, it starts defending people, it starts taking sides, though it is not supposed to, and it claims also it doesn't. But automatically when you're discussing a point with a lot of vigor and force, your sides are determined by each other, the people, and your opinions are formed. Lawyer in any case would always be looked at through a glass with color. रंगीन शीशे से ही देखा जाएगा. The prism of bias हमेशा एक वकील और society के बीच में रहेगा, और cause के बीच में रहेगा. It will always be there. But that is what is the beauty of this profession. It's a challenge every day. You have a new day every day. Every judge is new, every case is new, every point is new. When you appear in the court,
Jyotishi sir would be explaining it, I'm sure, because with this, the illustrious standing and the forceful advocacy that he has, he would tell us that how the battles are fought in the court and won. That's every moment, every second it appears as if you're going to lose. But then you take another shot, you still take another shot, and then you win. So, I would rather like the other August panelists to come and express their views. So my view on this subject is that lawyers are the builders of society. Law is abstract law. Whoever causes death with the intention of causing death or with the intention of causing such grievous injury, how many common people would be able to understand this difficult language? So it's the lawyer who makes it simple. जो इसको बहुत आसान शब्दों में दुनिया के सामने पेश करते हैं, कोई जानता नहीं है, जिसको मालूम ही नहीं होता वकील साहब कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ती है. His day starts after the court closes. जब सब लोग सो जाते हैं तो लॉयर सब पढ़ रहे होते हैं. और क्या पढ़ रहे होते हैं? पंचतंत्र नहीं पढ़ते वो, प्रेमचंद की कहानी नहीं पढ़ते वो एब्स्ट्रैक्ट लॉ पढ़ते हैं जिसे आम आदमी देखना भी पसंद नहीं करता. उसमें कहीं भी नहीं लिखा होता कि लॉयर साहब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं. At the end of the day, he doesn't get a cake. Despite all that study, still the next day, the judge still tells him, "No, Mr. So-and-so, you are wrong absolutely." Right? So, let's stop looking at the lawyer through the lens of bias. Let's start looking at him with the lens of appreciation and happiness. And I may also share with you guys this book. I'm writing a book. I'll share this title here. Brogue and Surge. Brogue is the shoe that we wear, right? It's a kind of a shoe, and Surge is the trousers that you wear as a lawyer. Brogue and Surge, an ode to a lawyer. So I'm writing a book in praise of lawyers, and it's about to be completed. So this stage, this forum has given me an opportunity to tell you guys, this is one of the professions which I love the most. I have served in the forces and the Indian Army as an officer for 32.5 years. If I put another year of training, it's 33.5 years as an officer. But I love this profession as much. It's the most beautiful profession. And I'm not saying it just for the sake of saying it. And after 33.5 years of army career, I still decided to wear this black jacket. Is a testimony of how much I love this profession. And I'm sure you too do. And if you ever have a doubt in your mind, please call me up. I'll help you to remove it. Right. Thank you very much. Have a good night. Thank you so much, sir, for providing such a deep insight into the matter. And rightly said, Audi Altram pardon. But the question is, are we actually hearing? We learn it every single day, but unfortunately, only a decimal percentage of us are only implementing this. The real question is, if we could just implement the phrase Audi Altram pardon, I think majority of the problems will already be off the desk. Now I would like to invite Dr. B.M. Jyotishi, Advocate Supreme Court of India, on the podium, please. Thank you, sir. Thank you, Director Mr. Jodi, Mr. Jinder, Vice Chairman, and Dean Corporate Affairs, Mr. Jinder, my panelists, my colleague, Mr. Vashishta, Mr. Renu, and all faculty members of the elite institution, and all future lives. It is best opportunity for me to address you, as you are all future lawyers and we certainly meet in the court once a day. So why should I welcome later? I welcome all of you today, sir. Thank you very much. See, when I go through this topic which faculty member has chosen this particular topic is really a wonderful topic. Stanford University
has selected this particular topic and they have done 3 days seminar on this particular topic. 3 days seminar. And we are here for only 2 hours. 3 panelists. 15 minutes for me, 15 minutes for this, and 15 minutes for Mr. Vashishta and for some later. And they have done 3 days seminar on this particular topic. So learning is really wonderful for this topic, and we start, then certainly you will learn. So whatever the time has been allotted to me, I am just trying to give the best to you. So first of all, this representation of criminal lawyers in popular culture through the lens of bias. This topic is very large, so how can we understand in the short period? I have given these 3-4 topics just to understand easily. Critical analysis of how misconceptions about the criminal justice system and bias against women and poor. Second, we shall discuss enrollment limitations, substantive and procedure law, legal analysis and reasoning, professional skills. So we shall one by one learn about the all topics. So first of all, what is the misconception before the society about the criminal justice system? You know, only 16% are convicted. पुलिस कैन अरेस्ट. अब क्या है कि सोसाइटी के सामने अरेस्ट के ऊपर बड़ा जबरदस्त पंगा है. सोसाइटी कहती है कि पुलिस वाले के पास इतनी बड़ी पावर है वो किसी को अरेस्ट कर सकता है. कॉल किया, उठा ले गया, चला गया, सब कुछ हो गया. नो, दिस इज नॉट द केस. First of all, we have to understand what are the powers given by under this CRPC to the police officer to arrest that particular person. Any person को कर सकता है, नहीं कर सकता है. So yes, first of all, we have to see that the cognizable offence है कि नहीं. Whether the offence is cognizable or non-cognizable. अगर cognizable offence है, yes, he has the power to arrest for the investigation. Further, he will produce before the court within 24 hours. But if there is any uncognizable offence जो कि नहीं है, उसमें तो पावर ही नहीं है, तो कैसे वो अरेस्ट कर सकता है? वो नहीं कर सकता. Supreme Court in the case of the Arnesh Kumar case, it has been ordered that section 41 of the CRPC is required to be applied before arresting any person. Non-cognizable offences के लिए section 41 का पूरा compliance को करना पड़ेगा. उसके लिए पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी. रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बिफोर द कंसर्न जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. देन ही विल टेक द ऑर्डर फॉर द अरेस्ट फॉर द इन्वेस्टिगेशन. देन ही विल गो फॉर द अरेस्ट. तब कर सकता है वो, डायरेक्टली वो नहीं कर सकता. अब क्वेश्चन है कि क्या किसी ने कंप्लेंट फाइल करी पुलिस में, एंड क्या पुलिस ऑफिसर आपको विदाउट इश्यूइंग द नोटिस कॉल कर सकता है पुलिस स्टेशन में फॉर द पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, फॉर द पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स? नो. उसके लिए भी he is required to issue a notice under section 41. Notice will be served to you. Special date will be given, time will be given. Then you will go. आप उसकी फोन कॉल पे आपको जाने की जरूरत नहीं है. ये लीगल अवेयरनेस की कमी है जो हमारी पब्लिक को पता ही नहीं है, इसलिए वो पुलिस से डरते हैं. और जो पुलिस को इस बात का पता है कि उनको पता ही नहीं है, तो इसका वो मिसयूज करते हैं. तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सेक्शन 41 के कंप्लायंस से नोटिस इशू करेगा तब वो कर सकता है. अगर पुलिस पे बोल रहा है फोन करके कि आपको कल आना है, आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट यू आर रिक्वायर्ड टू गेट द नोटिस. वो इशू करेगा ऑफिशियली, देन यू विल गो एट द टाइम एंड डेट गिवन बाय देम फॉर द पर्पस ऑफ द असिस्टिंग द इन्वेस्टिगेशन. Most of the people think all police officers are correct and manageable. Not true. If one is correct officer, it doesn't mean the other police officer in the same police station will be correct. You should meet to the senior person of the police station. The assistant commissioner there, they are the IPS officers. How they can be corrupted? Immediately, you and me, among us, somebody has joined the police force, and he was the IPS officer. You can meet directly with the assistant commissioner, then deputy commissioner, additional commissioner, police commissioner, home ministry. There are number of departments. What we lawyer do? कभी कुछ मिलता है हमारे को तो हम देखते हैं कि कहाँ जानी है, तो हम immediately गवर्नर को भेजते हैं, चीफ मिनिस्टर को भेजते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भेज देते हैं उसकी कॉपी. हरासमेंट इमीडिएट रुक जाती है आपकी. अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ ऐसा कुछ आपके गलत होने वाला है, you inform to the concerned lower departments. चीफ मिनिस्टर पब्लिक सर्वेंट है, आप उसको भेज सकते हैं होम मिनिस्टर को. You can send your complaint. Even PM also, you can also send to the PM also. They will also mark the particular complaint to the particular concerned department.
सो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये लीगल अवेयरनेस की कमी के कारण से सब कुछ सोसाइटी में मिसकंसेप्शंस हो रही है. Even some people are thinking judiciary is biased. When the judicial officer is bound to take a decision on the basis of the procedure prescribed under the CRPC, how a judicial person can be biased? क्या वो evidences या कोई witness testimony से कोई छेड़छाड़ कर सकता है? No. इसका मतलब केस आपने कमजोर बनाया. जिस लॉयर ने केस बनाया वो कमजोर बनाया, इसलिए छेड़छाड़ की बात पब्लिक सोच रही है. If the case has been made strong, then how no any official, even judiciary or the opposite lawyer or defense lawyer or the prosecution, कोई भी कुछ नहीं कर सकता. On the basis of the facts, witness testimony, evidences, the decision will be taken. अभी क्रिमिनल के अंदर सबसे बड़ी बात है कि ट्रायल प्रोसीजर के बारे में किसी को नहीं पता होता, और ट्रायल प्रोसीजर हम सबको जानना बहुत जरूरी है. और अगर इसकी अवेयरनेस पीपल को, पब्लिक को भी दे दी जाए कि ट्रायल प्रोसीजर होता है कैसे, कोर्ट में किस तरह से क्रिमिनल को ट्रायल किया जाता है, तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है. तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज करता है. देन चार्जेस आर फ्रेम्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड. द प्रोसिक्यूशन गिव द एविडेंस एंड विटनेस. The accused is also given a chance to present his case and the statement of accused is recorded. यहाँ पर कुछ चांस मिलता है. The defense lawyer from the side of the accused give the evidence. Both the lawyers, the prosecution and defense lawyers have a final argument. The last stage after closing and final arguments in the judgment, it will the accused either acquitted or the convicted. ये एक सीक्वेंस में सीआरपीसी में प्रोसीजर किया हुआ है. दिस इज द ट्रायल प्रोसीजर व्हिच इज डन इन एवरी कोर्ट. तो जब हमें पता है तो कहां पर प्रॉब्लम है, मिसकंसेप्शन क्यों है? इट मींस लॉयर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एड्रेस और टू इन्फॉर्म टू हिज क्लाइंट व्हाट इज द प्रोसीजर अंडर द सीआरपीसी. कोई पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं कर सकता. दिस इज द प्रोसीजर. वो चार्जशीट में छेड़छाड़ कर सकता है, कैसे कर सकता है? बट फैक्ट्स आर क्लियर. उसको भी तो तैयार करना पड़ेगा. विटनेसेस अगर मैनिपुलेशन करेगा तो वीडियोग्राफी करेगा तो मालूम नहीं पड़ेगा. अगर वो मर्डर के प्लेस की वीडियोग्राफी हो रही है या सीन क्रिएट कर रहे हैं, तो जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ छेड़छाड़ करने की है. लेकिन यस यू मस्ट बी विजिलेंट. आपको हमेशा वहां पे रहना पड़ेगा, उस फैक्ट्स के साथ देखना पड़ेगा. पुलिस में क्या हो रहा है उसका डे टू डे बेसिस के ऊपर इंटरोगेशन करना पड़ेगा. आपको पूछना पड़ेगा कि मेरे केस में क्या हो रहा है. पर पब्लिक नहीं पूछती है. वो सोचती है कि कोर्ट करेगा, जो कुछ करेगा या मेरा लॉयर करेगा. In India, there is a misconception that lawyer will do everything, and family will not support. The accused person family will not do anything else. Even they are not required to visit the court premises and for the date. कभी देर से आ रहे हैं, कभी जल्दी आ रहे हैं, और डेट लग गया, 6 महीने का फिर डेट लग गया, फिर कहते हैं लॉयर ने कुछ नहीं है. क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं पुलिस, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन. A crime is always committed against the society at large and not against a particular person. Therefore, always the state is against the courts. The purpose of a criminal trial is to provide fair and impartial justice to the victim. इसलिए कभी भी कुछ ऐसा नहीं है. कोर्ट ने तो बहुत कुछ दिया. वीमन के अगेंस्ट की बात करें तो the court has delivered landmark judgment from the time to time to enhance the criminal justice system and overcome to the lacunas. Lalita Kumari versus State of UP 2014, the court made it mandatory for the police officers to lodge an FIR. In Saira Bano versus Union of India 2017, the court has declared that the practice of triple talaq is unconstitutional and punishable. In Visakha and others versus State of Rajasthan 2017, the court has given guidelines for sexual prevention, prohibition and redressal of sexual harassment at workplace. As a result, POS Act has come 2013. Every workplace में हमारे यहाँ भी होगा. In this institution also the POS everywhere is required, whether there is a female or not. Suppose in an institution there is no female worker is there, or no female employee is there. Despite the fact you are required because somebody is visiting, you have not pasted a board outside the premises that no female is allowed inside the premises. So any female can come to the institution. Therefore, you have to form the post committee in this in the premise under the Post Act. Second limitation. Is there any limitation in the CRPC? Yes, there are 7 sections under the CRPC.
section 467 to 473, it speaks about the limitation. But very simple to understand that it is based on the punishment. If there is any fine or any punishment against the offense, like 6 months, so 6 months is the limitation. If the 1 year imprisonment, then 1 year is the limitation. If the 3 year is the limitation. So very easy to learn कि CRPC में क्या limitation है किसी चीज को फाइल करने के लिए, लेकिन more than 3 years cases के लिए कोई भी आपकी limitation नहीं है. But yes, there is a provision of the continuation of delay also. The court magistrate has power on the basis of the genuine facts, they can condone the delay. What can be the main grounds on the basis of the continuation of delay can be granted? The Honorable Supreme Court of India in the Mohsin and others versus Union of India case had that illiteracy, poverty and non-ability of a victim is a satisfactory rationale for the continuation of delay. Even lawyers' contradictory advice is also condoned in the matter of the state of Tamil Nadu versus V.N. Suresh Rajan and others. Bona fide mistake of a lawyer has also been taken as a ground in the matter of the boutique hotels India versus ACIT IEAT Delhi. So continuation of delay provisions are also there. यदि किसी में कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो आप उसको डिले करके उसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. Now the point comes to substantive law and procedural law. We understand that substantive law is an act, that is IPC, and procedural law at the CRPC. So on the basis of what are the provisions? Procedural law is the support or it is to facilitate the statutory laws. जो कुछ IPC में लिखा हुआ है उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा कोर्ट में या पुलिस में कैसे काम करेगी, this has been written in the CRPC. Now the point comes legal analysis and reasoning. This is the most important point for the lawyers who really are willing to become a criminal lawyer. So they must go through the and they are required to create the skills for the legal analysis and reasoning. In the current technological time, there are the methodology of criminal analysis. The idea, I denotes to identity, D denotes to define the offence, E denotes to explain the offence, and A denotes to analyze reasonable person, multiple causes, mens rea, and transferred malice. These are the main and legal analysis points on which a criminal lawyer is required to be exercised for making his good arguments as well as the good case. Now come to the legal reasoning. Ability to read in legal rule. सबसे पहले हम ये बताओ कि लीगल रूल को कैसे पढ़ते हैं हम लोग. I understand that the concerned faculty has also told you that how the Bare Act is read. It is really a wonderful idea, and अगर आप उसको break करके पढ़ते हैं, थोड़े टुकड़े में उसको पढ़ते हैं, तो you can understand why, because it is a legal language and legal पास बहुत ज़्यादा requirement है. To gather effective and relevant information about the court case, having the skill of scanning a plethora of documentation, you have to check कि 100 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो घबराना नहीं है, 100 को आपको पढ़ना है, नेक्स्ट मॉर्निंग आपको ब्रीफिंग के लिए तैयार रहना है. अभी 200 पेज की कोई फाइल दी गई है, रात को पढ़ करके सुबह ब्रीफिंग के लिए रेडी रहना, मॉर्निंग 8 बजे उसको बुलाया है, तो आप केवल पढ़ लेंगे. मॉर्निंग में ब्रीफिंग में उसके लॉयर को आपने क्वेश्चन पूछने हैं कि हाँ इसमें बताइए पेज नंबर 16 में क्या लिखा है. हो सकता है ब्रीफिंग लॉयर को पता ही नहीं हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, because you are fighting the case before you are presenting the case before the High Court or Supreme Court. So each and every page, but you will create a skill that on what page, on what you are required to read, not all words of the pages. तो पूरे 200 पेज के 200 जितने वर्ड लिखे सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है. Relevant words, relevant sentence, relevant paras are required to be read, which are most important for the case, and you want some clarification from your briefing counsel or the client so that you can prepare your brief to present before the court. And ability to think critically. What is important with a criminal trial, even if it's not clear at first glance, they pay attention to every detail given by the witness during the prosecution. अगर ट्रायल चल रहा है कि प्रोसिक्यूशन चल रहा है और एक लॉयर खड़ा हुआ है सामने आर्गुमेंट चल रहा है, तो
आपको उसका क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बहुत सारे जगह पे अभी कॉलेज ने कोर्ट की विजिट कराई होगी और कुछ केसेस के अंदर आप खड़े हुए सुने हुए होंगे, और 90% मैं कह सकता हूँ कि जब आप बाहर निकले होंगे तो आपको 90% केस के बारे में पता ही नहीं होगा कि वहां पर हुआ क्या। सो करना क्या है, when you are in the court and there is an argument going, some two lawyers are arguing with the case, you must pay attention to both of the lawyers and you are required to note the points, important points on what topic they are discussing in the court and what they are trying to convince to the court. High emotional intelligence and empathy, this is also a skill required to be a criminal lawyer, ability to give and receive feedback, negotiation skill, leadership skill, thinking outside the box, working under pressure, good communication skill, to convey information in the most effective way possible, perseverance, and finally, आप में सबसे ज़्यादा जो requirement है, that is confidence. In every moment कुछ भी काम करें आप अलर्ट हैं, और यदि कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं ब्राह्मण हूँ, एक बात बताता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ के जाएं। हमारे यहाँ तो जो भी कोई जूनियर इंटर्न करने आता है और उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम बोलते हैं कि कल आपने 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ के आनी है, तब बात करें। और वो जब भी हम कुछ पूछते हैं तब नहीं बताता, तब कहेंगे बाहर जाइए पहले हनुमान चालीसा पढ़ के आइए, तो पता नहीं क्या होता है, हमें नहीं पता कोई असर होता है नहीं होता, लेकिन वो जब बाहर से आता है तो उसमें कुछ कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि वो समझता है कि हनुमान जी मेरे साथ आ गए। तो यस, इट इज इन प्रैक्टिस। और आपके बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या ब्राह्मण हैं जो पूजा पाठ करते हैं, वो कहते हैं कि हनुमान चालीसा को पढ़ने से कॉन्फिडेंस तो आता है, तो जरूर हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। All lawyers are required to have the confidence, so please create confidence on daily basis। और थोड़ा आपका जो चलने का करने का अपनी स्टाइल है वो भी आपको क्रिएट करना चाहिए। So yes, really it is wonderful topic and we can learn more and more. Thank you very much to be here. Such a beautiful insight on the Indian judiciary system and how to cope up with the practicality of law and court, and obviously the skills required to be a criminal lawyer. Now I would like to include Dr. Anu Professor. I would like to request Dr. Anu Professor to come at the podium and my co-panelists, Colonel Saab, Dr. Jyotishi, Dr. Neelam, Dr. Johari, and the whole GIPS team. I would like to thank to the team that who have given me the opportunity to express my views on this important topic, representation of criminal lawyers. It is alleged bias with that also. So how will you treat this popular culture, pop culture? Popular culture will relate not with the elite class, rich people, but it is a general public opinion. The society which frames this opinion about someone. So this representation complete in itself, or it is like not complete at some part. Representation of criminal lawyer or lawyer as a whole, you can say, एक category में हम criminal lawyer को नहीं देखेंगे, advocate को भी देखेंगे, because you all are the going to be the lawyer in future. तो अगर criminal lawyer है तो उसकी तो personality हमारी society में बिल्कुल ही अलग तरीके से treat की जाती है। पर ये हुआ क्यों? Why we treat a lawyer in that very much sense के वकील है, लूट लेगा, या वकील लड़की है, शादी नहीं करनी, या हम अपने दामाद को भी वकील है, तेज होगा, ऐसी परसेप्शंस है सोसाइटी के अंदर। तो क्यों है ऐसी? What are the reasons behind it? तो ये जब हम बात करते हैं ना, when we talk about the representation and the alleged bias, bias को हम lenses की कैटेगरी में जब देखते हैं ना कि ये फेवरेबल है, पार्शियली है, तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी पढ़े, आपने पढ़ा है सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव
ठीक है, तो उसमें हमने नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हम पढ़ते हैं, उसमें भी ये एक बात आती है बायस, पर्सनल बायस, पिक्यूलियरली बायस। तो उसके अंदर भी हम कहते हैं कि हर कोई बायस को हम बायस की तरह से ना देखें। अगर मेरे किसी हेड ने मेरा नाम प्रपोज कर दिया है और मैं लेकिन टोटली क्वालिफाइड करती हूँ सारी कैटेगरीज को, सब क्वालिफिकेशंस को, तो अगर मैं वहाँ अपॉइंट हो जाती तो हम ये कहते हैं ना कि ये तो इसका नाम गया होगा इसलिए इसकी अपॉइंटमेंट होगी। नहीं, कई बार क्या है, रीजनेबलनेस की बात करते हैं हम, रियल लाइक्लीहुड ऑफ बायस, कि वो बायस की तरह लग रहा है पर एक्चुअल में बायस है नहीं वो। तो उसी तरीके से जब हम कहते हैं ना कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रिमिनल लॉयर इन पॉपुलर कल्चर, तो ये कल्चर कहाँ से आया? कल्चर को अगर मैं पीछे जाती हूँ प्रिमिटिव स्टेज से, वैदिक पीरियड से या पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले टाइम से, क्योंकि जब ये 200 साल पुरानी बात होगी अब, क्योंकि जब उस टाइम जो लड़ रहे थे लोग तब भी क्योस था, स्ट्रगल थी, राइट्स को लेके भी थी, बेसिक नेसेसिटीज को लेके भी थी, और तब भी वकीलों का जो एक पोर्शन था ना लॉयर्स का, उसने बहुत बड़ी भूमिका प्ले करी है। जैसे सर ने भी, कर्नल साहब ने भी जिक्र किया ना कि अब जितने भी हमारे पुराने राजनेता हुए हैं, जैसे गांधी का नाम बहुत पॉपुलर है, जिन्ना का नाम पॉपुलर है, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम पॉपुलर है, ये सारे वकील एलएलबी थे, सारे लॉयर्स की कैटेगरी से थे, कुछ बाहर से पढ़ करके आए थे इंडिया में। तो कई बार एक आइवर जेनिंग हुए हैं जूरिस्ट, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा हमने, लॉ में भी पढ़ते हैं उसको, आइवर जेनिंग्स। उसका कहना था कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन आया ना, इट इज अ गैला पार्टी फॉर द लॉयर्स। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे राइट दे दिए, इतने सारे फंडामेंटल राइट दे दिए, वो वैसे रिप्रेजेंटेशन हो नहीं रही है, पर उसमें जो आदमी पढ़ गया है उसको तोड़ मरोड़ के कैसे रिप्रेजेंट करेगा सोसाइटी के अंदर, अपने फायदे के लिए भी, अपने नुकसान के लिए भी। तो यानी कुछ तरीके से इसको अलग अलग तरीके से हर आदमी ने, जैसे गांधी ने हिंद स्वराज किताब लिखी, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट रहा, और उसके टाइम से भी जो है वहां बाद में आप देखो इंडिपेंडेंस के बाद वाला जो पीरियड रहा है, 5 ईयर प्लान 80s में आए, 1980 के बाद हमारे पास जीडीपी की बात होने लगी, या उसके अलावा जो है अब जब हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं और बहुत सारे हर नुक्कड़ पे, हर कोने पे जाते हैं, एनएलयू एस्टैब्लिश हो गया, 5 साल कोर्स एलएलबी का सारे दे रहे हैं, बीबीए, बीए, एलएलबी, है ना। तो उससे क्या हुआ कि हमारी रिकॉग्निशन आ गई उस प्रोफेशन को लेकर के। पहले जब जैसे सोली सराफ जी है, कपिल सिब्बल जी है, या पंजाब में जितनी है, उस टाइम लॉ को इतना टेंशन नहीं दिया हुआ था, थोड़ा सा बिरला टाइप जिसको कहते हैं ना। लेकिन अब क्या है, अब वकीलों की भी तादाद बढ़ रही है, संख्या ज्यादा बढ़ रही है, और उस वकील का जो प्रोफेशन है वो कैसे कैसे करके आ रहा है लाइमलाइट के अंदर, ये भी आप सबको पता है कि हमारे जो इडियम्स है, हमारी फ्रेजेस हैं, हमारी बुक्स हैं, मूवीज, फिल्म्स, इनका तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कॉमन आदमी तो वही देख के एक परसेप्शन दिमाग में बना लेता है। और उसके अलावा बहुत सारी जो है ना, जो मूवीज को अगर हम देखते हैं, दामिनी मूवी देखी है आपने? दामिनी, उसमें एडवोकेट चड्डा का जो पर्सनालिटी था, जबकि वो नेगेटिव था, क्योंकि नेगेटिविटी को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जबकि जो सनी देओल का था तारीख पर तारीख वाला डायलॉग, वो इतना पॉपुलर ना होकर के चड्डा जी ज्यादा फेमस हो गए, क्योंकि वो कहता था मैं फैक्ट्स को भी करेक्ट कर दूंगा। तो यानी होगा उसके बाद मेरी ना हार्डली यही पॉजिटिव थी कि जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरह हम किसी पॉजिटिव चीज को रेफर कर दें, नेगेटिविटी ज्यादा है हमारे माइंड के अंदर, और उसके साथ क्या है, फियर है हमारे अंदर, खौफ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, प्रोफेशन को लेके, पर्सनैलिटी को लेकर। और उसके अलावा अगर हम बाद में देखें कि इसके पीछे ये सारे रीजंस रहे हैं ना, क्योंकि उनकी वेजेस को लेके, उनको जो ड्यू उनका दिया जाता है वो नहीं दे पाते हैं हम, या हमें लगता है कि चाहे वो अच्छा ही करे किसी क्लाइंट के लिए, फिर भी कहते नहीं लूट लिया वकील ने, दिमाग परसेप्शन ये है। फीस जो उसकी जाती है वो एक पॉजिटिविटी की तरह नहीं देखी जाती, वो नेगेटिविटी की तरह देखी जाती है। तो बहुत सारे हमारे रीजंस रहे हैं पॉपुलर कल्चर के अंदर, जो बायस का हम, आप इसमें जो टाइटल आपने दिया उसको देखते हुए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कितना ही लार्ज इसको आप डिस्कस कर लो। उसके अलावा क्योंकि हम गुलाम भी रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, फिर उसके बाद काफी तरह से इसको कंटेस्ट किया गया अलग अलग स्केल्स के ऊपर, हमेशा लड़ाई झगड़े सोसाइटी के अंदर चलते रहे हैं, और उनको करने के
ये जो है ना एडवोकेट्स दे हैव यू नो टेकन ऑल द बुलेट्स एट देयर शोल्डर्स कि भाई अब जो है हम ही इसका निपटारा करेंगे चीजों का, और उन्होंने बीच में अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले भी करा है। उसके अलावा अगर हम देखें लिटरेसी भी एक रीजन रहा है, क्योंकि अनपढ़ता इतनी ज्यादा है तो जो पढ़ गया वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको कहेगा ये सेक्शन है, ये ऑर्डर लगना है, नहीं तो आप अंदर चले जाओगे, नहीं अंदर नहीं जाओगे आपकी बेल नहीं होगी। तो बहुत तरीके से आपको एक खौफनाक तरीके से प्रेजेंट भी किया जाता है चीजों को, और इसमें जो है अपने तरीके से सही भी है क्योंकि ऐसा हो भी रहा है। और उसके अलावा जो है हम देखते हैं, अगर हम इंडिया के साथ वेस्ट को कंपेयर कर लेते हैं, वेस्ट के अंदर क्या एक बैलेंस क्रिएट किया जाता है एडवोकेट और जजेस के तरीके से सोसाइटी के अंदर। और अगर आप वहाँ एक अब देखें, मैंने नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है, अगर आप भी देखें उसको तो यू विल फाइंड के वेस्ट के अंदर जो एडवोकेट का क्या रोल है। द नेम ऑफ द मूवी इज बेटर कॉल सयोल। आप देखेंगे तो ये जो सोल गुडमैन है एडवोकेट, ये एक पार्लर बाहर लेडीज रन कर रही हैं, ही नीड्स अ प्लेस टू सिट, वो बाहर सारे पेडिक्योर मैनिक्योर चल रहा है एंट्रेंस पे, वो उनको लांग करके अंदर जाता है, छोटा सा केबिन है उसका चेम्बर, और वहां जाके वो फ्लाइट करते हैं अपनी, और बाहर आके कहते हैं कि ये प्रो बोलो जो काम है ना ये ज्यादा जरूरी है। कहता 80% अगर हम गरीबों की मदद कर देना तो जो 20% है वो अमीरों से हमारी जेब में आ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने प्रोफेशन को किस तरीके से लेते हैं, तो आप उसको भी देखिए। और उसके अंदर यू विल फाइंड अमेरिकन सोसाइटी का लीगल ड्रामा डिस्प्यूट किस तरीके से, उसका भाई भी है जो एक बहुत प्रैक्टिशनर एस्टैब्लिश्ड लीगल फर्म रन करता है, और ये थोड़ा सा इस तरीके का नोटोरियस पर्सनैलिटी है, ये भी वकील है, लेकिन इसकी जो पूरा थ्रू आउट द मूवी ना कैसे रन करते हैं केसेस को लेकर के, कैसे बिल्स को लेकर के, कैसे प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर के, तो यू विल फाइंड के इंडियन कल्चर और वेस्ट के कल्चर में कैसे डिफरेंशिएट यू कैन डू। देन देयर आर द पोटेंसी ऑफ केसेस। अब जब तक आप उसमें कहिए कि अगर आप डेटा को भी उठा के देखें ना, मेरे ख्याल से 25% लोग जो हैं वो लीगल शक्ल्स, लीगल प्रॉब्लम्स के साथ जुड़े हुए हैं, वो उसी बाउंड्रीज के अंदर हमारे 25% हमारी पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इन लॉ प्रोफेशन को। तो उसके साथ अगर आप देखें कि जो इसमें जो है ना पेडेंसी ऑफ केसेस बहुत आ गए हैं, पेडेंसी ऑफ केसेस, तो नंबर ऑफ पेडेंसी ऑफ केसेस है। फिर हमारे चीफ जस्टिस जी की भी एक स्टेटमेंट आई है कि जो लॉ है वो दैट इज फॉर द रिच। अब कॉमन आदमी के पास ना तो देखो लॉयर का हायर करने की फी देने का मादा है, ना वो वहां तक पहुंच पाता है। उसके बाद आप पटिशंस, रिट्स और सुप्रीम कोर्ट तक तो बहुत कम लोग जा पाते हैं, किसी को डर के ही रह जाते हैं। और जो लीगल एड का सिस्टम है, लीगल एड भी इतना अच्छा एक कहिए कि एबल एडवोकेट हमें नहीं मिलता है वहाँ पे, दो वी हैव दैट राइट कि भाई हम फ्री ऑफ कॉस्ट विमेन है, कोई सोशली डाउन टॉर्डन स्ट्रेटा है, वो दे कैन हायर अ लॉयर फ्रॉम देयर फ्री ऑफ कॉस्ट। पर क्योंकि वो ज्यादा तजुर्बे वाले एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट्स नहीं होते हैं वहाँ पे, जो कि एक जरूरी है अगर सोसाइटी का तजुर्बा लेना है ग्रास रूट लेवल पे, तो दे शुड ऑल्सो बी वेल ट्रेन्ड एडवोकेट्स फॉर hiring free of cost purpose there. And then if you see the kind of way, okay, what we can do, what is the solution for this? If you want to correct the the personality of a criminal lawyer, के भाई वो किस तरीके से उनको देखा जाता है, या उनको हमेशा ही कहते हैं ना ही जाओ नजदीक से, ना ही ऐसे करो इसको, वकीलों को और क्या कहते हैं डॉक्टरों को, उनके पास तो भगवान हमें भेजे ही ना। जिस दिन कोर्ट केस हो गया, ऐसे ऐसे हमने अखबारों में अपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि 25-25, 30-30 साल लगते हैं डिसीजन को आने में ना, जस्टिस डिलेड डिनाइड वाला जो कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा हम जैसे भी देखते हैं कुछ की तो डेथ ही हो जाती है, प्रॉपर्टी मैटर्स तब सॉल्व होते हैं, मतलब उसके आगे तक लीगल जज फाइट करते रह जाते हैं। So this is the way the lacunas are around us for the legal judicial system wherever we go, चाहे एडवोकेट का प्रोफेशन देख लो, चाहे जुडिशरी का देख लो, ऑनरेबल जुडिशरी is doing very great role, they are producing very good judgments before us. We cannot criticize the system, but it is the awareness, it is the sensitization. Being a budding lawyers, you are going to be
going to enter into this field. So this is the only your institutional level that you can make your mind कि कैसा मुझे एडवोकेट बनना है. आपने पैसे को बाद में देखना है, वो जो भी प्रायोरिटी होती है. मैं यहाँ कहूँ ये तो हिपोक्रेसी है कि भाई मैं पैसे ना कमाऊँ और फ्री में केस करूँ, नहीं. पर फिर भी आपको एक रीजनेबिलिटी और ह्यूमन माइंड, ह्यूमन राइट्स को देखते हुए थोड़े दिन आप प्लीज काम करिए, जिससे कि लोगों की मदद भी हो सके और आप पॉपुलर भी हो सके. आप जो भी करें यूनिक करें, बाकी तो सब कर ही रहे हैं. आप फॉर्म भी ज्वाइन करेंगे, आप इंटर्नशिप भी करेंगे, एवरीथिंग यू विल डू. बट इस तरीके से वी नीड टू बी मोर कंसिडरेट फॉर द एडवोकेट प्रोफेशन. हम उनके प्रति अपनी सोच को बदलेंगे और we should be loyal towards the advocates. We should be kind to our lawyers. Then you can say only then this can be out of the society के वकील प्रोफेशन को चूज करने के लिए हमने वकील से शादी नहीं कर दी, या ये लड़की वकील है तो आगे झगड़े ही करेगी. और मैं तो अपने फादर को सैल्यूट करती हूँ. 1996 के अंदर जब मैं LLB क्लास में गई तो 65वीं क्लास में 6 लड़कियां लॉ कर रही थी. मैंने MA में एडमिशन नहीं लिया, मेरे को वहाँ भी एडमिशन मिला था यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, पर मैंने लॉ में एडमिशन लिया. और that is why I am here. I am addressing you people, and I would like to say this to you, also advise you that more and more legal profession can be join this and do it is like in a practical way. इसको कहते हैं ना fruitful way में इसको complete करिए और आप कोर्ट्स में जाइए, जजेस बनिए, एडवोकेट्स बनिए, लीगल प्रोफेशन को अच्छे से ज्वाइन करिए, डेडिकेटेड तरीके से करिए. फिर एक जो जेंडर जो कि मैं खुद फीमेल हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा इसको एडवोकेसी करूंगी कि जो जेंडर की रिप्रेजेंटेशन है फीमेल लॉयर्स की एज वेल एज फीमेल जजेस की, वो भी अगर आप डेटा उठा के देखें तो बहुत कम है. 24 में से मतलब थ्रू आउट इंडिया में 24 लेडीज जजेस थी. 3 सुप्रीम कोर्ट तक जो मैडम बेनर्जी थी वो भी हमारी फैकल्टी में आई थी. तो थोड़ी है, यानी मुट्ठी भर औरतें कहेंगे इस प्रोफेशन में सक्सेसफुली गई है हायर जुडिशरी तक. तो मैं उसको भी कहती हूँ कि अब तो सिर्फ मेल और फीमेल जेंडर की ना रह करके हमारे पास थर्ड जेंडर की भी बात आ गई है, LGBTQ की भी बात हम करते हैं खालसा जजमेंट के बाद. तो इसके लिए आप अपने इस प्रोफेशन को फुली इंजॉय करिए और रीजनिंग अपने अंदर डेवलप करिए, रैशनैलिटी, लॉजिकल थिंक करिए, राइट भी करिए. उसके अलावा जो एडवोकेट्स हैं वो बहुत सारे एक राइटिंग वाला कम कंपोनेंट रह जाता है क्योंकि इतने बिजी हो जाते हैं. अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए एज अ क्रिमिनल लॉयर, एज अ सिविल लॉयर, so that the coming people can know what are the difficulties in reaching at that level. I think it is a very good profession. We should respect our advocates also, and all the best to all of you. Thank you. Thank you so much, ma'am, for such wise words. And I think most of us often have a question, who is a criminal lawyer? So ma'am rightly answered it. One who has to maintain the balance is a criminal lawyer. And he might be judged, he might be questioned, but then at last it all comes down to what he has to do. But if still there is some lack of confidence, so rightly mentioned by Sir, Hanuman Ji ki jai. Now let's follow up with the question answer session. Have a question, we'll be with you with the mic. Please raise your hands and we'll be there. Panelists, we have our first question. Good evening, sir. Good evening, ma'am. So, ma'am, my question is for you. Like you address that cinema is reasonable, cinema is culpable to a reasonable extent for creating negative stereotypes for lawyers. So, can you please explain some more contributing factors for these negative imageries? Hello. Now, yes, thank you. You have asked a very good question, a very rational question. I think popular culture involves various things: views, books, movies, music,
songs. So apart from the movies, you can read these things in the books also. And idioms are there, phrases are there, songs are there. Yes. They are all contributing to this, in the development of the society. Because it has a very important place like customs, traditions. If we go by our historical perspective, you will find these traditions, customs, the norms we have developed all around us, what our ancestors they tell us. We generally carry forward all these things. Yes. Anyone else who might have a question? We are open to the questions, let's fire it up. We have our expert opinions. Sure. Good evening, everyone. I'm Shaina, and my question to you is that dramatic representation defines to some extent a lawyer's perception in society. So, ma'am and sir, what do you think? What are the solutions in your eyes that the lowering public confidence in legal profession nowadays because of the way the media, or let's say the Bollywood, they make an image for lawyers in particular if the particular case is dedicated to a thing, like also the Sushant Singh Rajput case, let's say. So basically, before a judgment is even passed, we already have a perception of like people that this particular person is a convict, or probably we already form an image. So what do you think could be a solution to this? Thank you. Okay, can you hear me? Yes, जरा शांत हो जाएंगे तो हम सब इसका जवाब सुन लेंगे। शायरा ने सवाल पूछा है और क्या लास्ट में सब सुन सकते हैं मेरी आवाज़? तो मेरी ओर ध्यान दीजिए, राइट? बिल्कुल शांति से सुनिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा है मैंने। सबसे पहले शायरा मैं आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, मूवीज में लॉयर और स्टैंडर्ड लॉयर का दिखाते हैं, या लॉयर जनरली एक इंप्रेशन क्रिएट होता है कि वकील है। इसी हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे लास्ट में बैठे हैं मतलब देख रहे हैं कि इनके ऊपर देखिए ना सामने। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, और बाकी सब जो हमें याद रखनी है, जो मूवी बना रहा है, he wants to sell the movie, he doesn't want to sell the lawyer. उसने अपनी पिक्चर को बेचना है, उसने वकील को बेचना नहीं है, उसने अपने लॉयर को पॉपुलर नहीं करना है। मैडम ने कहा कि वो चड्ढा सा पॉपुलर है, obviously that was the quality of that actor who appeared in चड्ढा, right? So वो अपनी काबिलियत से खुद को पॉपुलर किया उन्होंने, right? मूवी में जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर करता है, जो प्ले राइट है, उसने पूरी मूवी एक पैकेज है, उसको चलाना है, he has to get his money back। जबकि हम बात कर रहे हैं तो वो लॉयर को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, फॉर इंस्टेंस वी हैव द लेटेस्ट वन जॉली LLB 1 and 2, सो वहाँ पर वकील को डायरेक्टर ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पेश किया है, राइट? और वी टेक द एग्जांपल ऑफ राजू Yes, exactly. Such very. बुलेट को ही चेंज करते हैं, फैक्स चेंज होते हैं। True. So मैं कह रही थी कि वकील कहते हैं मैं तो फैक्स एक बड़ी जब हम स्टूडेंट थे तो कहते कि वकील कौन होता है, वकील क्या चीज़ है, so we used to be एक बड़ा आपस में जोक था, we must know that, कहते lawyer is a person who talks to a duck, वो एक बतख से बात करता है वकील, and convinces her that to lay a square egg, वो बतख को कन्विंस कर देते कि भाई इस बार अंडा जो देना वो स्क्वायर होना चाहिए, and the duck gets convinced, वो मान जाती है कि हाँ इस बार जो बेटा मुझे देना है वो स्क्वायर ही होगा। So that is what is a lawyer, the quality of a lawyer। तो जो एक अनहोनी बात को
जो करने वाला उसको कन्विंस कर देता है कि मैं कर दूंगा, right? That you can go to the moon without oxygen. Yes, I am ready to go. So that is what is the quality of a lawyer. ये उसके बातों का ही तो हेरफेर है. What do we do in Supreme Court? What do we do in the High Court? What do we do in various tribunals as lawyers? हम क्या करते हैं? हम केवल अपनी जुबान, अपनी भाषा, अपने शब्दों को एक ऐसे तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि क्या हमारे इर्द गिर्द क्या है. इसी शब्द ही तो हैं, वर्ड्स ही तो हैं जो एक आदमी को अच्छा पेंट कर देते हैं, दूसरे इंसान को बुरा पेंट कर देते हैं. Right? So lowering of standards of a lawyer is not because of the lawyer himself. वो एक जनरल एनवायरनमेंट है. अब फॉर इंस्टेंस ये बात आमतौर पर मानी जाती है कि वकील तारीख के बाद तारीख क्यों लेता है? ताकि वो केस चलता रहे, है ना. डॉक्टर दवा देने के बाद मरीज को ठीक नहीं करता, क्यों? क्योंकि मरीज फिर उसके पास आएगा, he has to earn his money, he has to earn his livelihood from this. ये बहुत ही बड़ी एक अजीब बात है, लेकिन ये इसका हिस्सा है. वकील जो अच्छे काम करता है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? उसका खाना पीना जुड़ा हुआ है, राइट? उसको अलग नहीं कर सकता. Whatever he does in the court, he gets paid for that. As a consequence, वो उस केस की प्रोग्रेस के ऊपर भी उसका असर पड़ता है, राइट? क्योंकि वकील को तो रोज रोटी खानी है, तो क्लाइंट तो उसे रोज चाहिए ना. सो इस चीज के साथ भी जो लोग लॉ या लॉयर को अफोर्ड नहीं कर पाते आसानी से, कई लोग ऐसे हमें प्रैक्टिस के दौरान जोशी साहब बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं. कुछ मैं भी कुछ लोगों के साथ मेरा रब्ता हुआ, उनसे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, तो अलग अलग किस्म के लोगों से मिलना हुआ. कोई मथुरा से आता है, कोई आगरा से आता है. उनसे जब पूछा जाता कैसे आए, सुबह 4 बजे चलते हैं, बस में बैठते हैं, और जब वो पैसे देने की बारी आती है तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए असली भारत कहाँ है. जब वो आपकी फीस देने की बात करते हैं तो जब आप 1000 रुपया कहते हैं, उन्हें 1000 रुपया आजकल उसका कोई मायना नहीं, उनके लिए वो पूरे महीने की कमाई है. अगर आप उनसे 1100 रुपए कह देंगे ना, तो वह इंसान बहुत सा रास्ता पैदल तय करना पड़ेगा उसे, क्योंकि उसके पास 100 रुपए नहीं है, बस का किराया नहीं है देने के लिए. इस चीज के लिए वकील को बहुत ध्यान रखना है इसका, राइट? अब उस आदमी से जब आप फीस मांगते हैं या उसको एक तरीका और अगली लगाते हैं, तो उसने तो सारी जिम्मेदारी जज साहब के ऊपर छोड़ी है कि मुझे ये रिलीफ दिलाएंगे, मुझे पेंशन दिलाएंगे, मुझे ये अनुदान दिलाएंगे. लेकिन उसके लिए एक और तरीक पड़ती, वो फिर कहीं अगर मतलब दूर गाँव से आता है, झुंझुनू से आता है, और कैसे आता है वही जानता है. वो दाल की खेती होगी वो बेचता है, फिर पैसे होते, गेहूं बेचता, बरसात होगी गेहूं खराब हो गए, राइट? पैसे नहीं मिले. अब वो जो वकील के पास आता है, वकील उसका काम करने में असमर्थ है, तो वकील के बारे में वो अच्छा नहीं कहेगा, राइट? क्योंकि वकील का जो डॉक्टर का असर जो है काम को दवाई के ऊपर इमीडिएटली हो जाता है. वकील का जो फैसला है वो जज के हाथ में है. जज के पास 1000 केस लगा हुआ है, उसका केस कौन से नंबर पर पड़ता है? तो इतने सारे फैक्टर्स इसके बीच में हैं, और इनके बीच में से रिलीफ निकालना आपका काम है. उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है. उसके लिए मैडम जी आपको बता रहे हैं, उसके लिए बड़े साहब बता रहे हैं कि ये पढ़िए, ये करिए, ये जो कुछ मुद्दे बता रहे हैं वो जानना आप करते हैं. जो मैं कह रहा हूँ रीड वो वही है, उन किताबों में खोजना है आपको. इसके लिए हर आदमी तो वकील नहीं है, ये तो एलीट क्लास है. आप अपनी ताकत जानते हैं, बहुत ताकत है. आपको मालूम है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जब कमाई थी, जब जस्टिस चौधरी और वकील सारे इकट्ठे हो गए एक बार, मिलिट्री रूल को बदल दिया उन्होंने, सिर्फ वकील. अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप पुराने क्रॉनिकल्स देखिएगा. इसलिए आप एक बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशन में हो, बहुत जबरदस्त प्रोफेशन में, जो सब कुछ बदल सकता है. सबसे निडर काम है आप. कभी जिस इंसान को ना इंसान से, ना भूत से, ना कानून से किसी से डर नहीं लगता, दैट इज यू.
तो lowering of standards आपके हाथ में है। आप 900 स्टूडेंट्स हैं इस इंस्टीट्यूशन में, मुझे मालूम पड़ा है। ये 900 इंसान नहीं है, ये 900 इंस्टीट्यूशंस हैं। भाई आप दुनिया का लोगों का भाग्य बदलेंगे आप, राइट? ये जिम्मेदारी आप जानिए और आप अपनी काबिलियत जानिए, अपनी विलक्षणता जानिए। You're all artists. Please. चलो। जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं कि लॉयर्स का बारे में लोग इस तरह से देखते हैं, 1 मिनट के पैसे होते हैं बात करने के, सोचना तो दूर की बात है। We charge for minutes. We are working for the multinational corporations, and if we start, if they are calling us, you come to visit our premise, we start the meter from our office. When we start and we come back, the meter closed, and the hour-based dollar charges. So lawyer बहुत बड़ी चीज है। एक ही फर्क है लीडर में और लॉयर में। लीडर बड़े-बड़े काम करता है। मैं बताना चाहता हूँ, सिनेमा मूवीज में जो लॉयर की भूमिका दिखाई जाती है, ये डिपेंड करता है देखने वाले पर कि वो क्या देखना चाहता है। If you are going to be a lawyer, please see the skills what he is showing you. जो मसाला वो एंटरटेनमेंट के लिए डाल रहा है, आप उसको मत देखिए, वो आपके लिए नहीं है। That is for entertainment purpose for the non-lawyers. So we our opinions must be different. हमें मूवी में क्या देखना है ये डिपेंड करता है। पूरी स्टोरी नहीं देखनी है, हमें जो चाहिए वो देखना है। Yes. So but that is the only thing, like, you know, the majority people do not see it that way. And that is why, like, the majority gets influenced with that masala that you're talking about. So how do we counter that? How do we, what could be the steps to let people know that you do not have to see the profession that particular way? It has much more beyond that. So See, practically, अभी एक सोसाइटी में एक मोहल्ले में कोई लॉयर बन जाता है, तो आप मानो या ना मानो पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय होता है कि फलाने का लड़का या लड़की जो है लॉयर बन गई। क्यों? सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई आपसे। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कॉर्पोरेट में, दे आर आस्किंग द फैमिली लॉ क्वेश्चंस। वो आप क्रिमिनल कर रहे हैं, वो सिविल के क्वेश्चन। तो मतलब है कि लॉयर से एक्सपेक्टेशन कितनी है कि सोसाइटी वांट्स यू नो ईच एंड एवरीथिंग। बट इफ यू डोंट नो, देन हाउ यू प्रेजेंट, इट्स योर ड्यूटी टू प्रेजेंट द थिंग्स इन ए प्रॉपर वे। नहीं इतना तो बताइए, डॉक्टर क्या है, हमने प्रॉपर्टी के बारे में क्या है, किसी अदर चीज में क्या है, हम बेसिक तो बता ही सकते हैं। तो प्रैक्टिकली प्लीज हेल्प टू द पीपल ऑफ द सोसाइटी, तो ऑटोमेटिकली सोच जो है चेंज होगी। और आने वाले टाइम के अंदर मेरी भी दो बेटियां हैं, मेरा एक बेटा है, वो ना लॉयर्स। मेरी डॉटर की मैरिज करने में यस आई फेस प्रॉब्लम, बट फाइनली वो बिजनेसमैन को मैरिज हुई है। तो अब कहने का मतलब ये कि सोसाइटी एक्सेप्टिंग द पीपल, और आज हर घर चाहता है उसके घर में एक लॉयर जरूर हो, क्योंकि लॉ की प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं है, लोग को अंडरस्टैंड करने के लिए। नाउ हमारा दिन बहुत अच्छा है। thank you so much. Vashishta, I have a question for you. Since you just now spoke about the artistic freedom that the media ends up taking, so I have a question that there is a direct link between artistic freedom and the constitutional guaranteed rights of freedom and speech of expression. So how can we balance the two without infringing on each other? ये balancing का सारा खेल कैसे होगा सर? I would like to request the audience to please remain in silence. Yeah. But right, partly I'll answer, and I think all three of us can answer this separate part separately. If I look at my experience of life, we started from the time when there was a concept of limited freedom, right? Emergency, lifting of the freedom, lifting of the emergency, then lifting the whale doctrine came into the constitution, though it was there long back, Carnegie versus Stevenson, Ryland versus Fletcher के केस के टाइम से था, लेकिन practice में नहीं था. But by and by, we came to believe in the concept of absolute freedom. Picture बनाने की freedom है, कुछ भी बनाएगा वो, it's his wish, right? Morality से सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, social norms को affront नहीं करना चाहिए, लेकिन freedom of expression means you are given the freedom to express anything that you like.
और उदाहरण आपके सामने है, आज की तारीख में 497 सेक्शन आईपीसी एडल्ट्री जो है उसे सेट असाइड कर दिया गया। फ्रीडम है टू डिटरमिन द चॉइस ऑफ सेक्सुअलिटी। देन एलजीबीटी, it has become acceptable norm in the society now. एक वक्त था sati was accepted norm, then sati went out. The women used to be burnt alive, and it was accepted. So it changes as the society evolves and the passage of time. Things do change, things do happen. Striking a balance, courts are doing an excellent job. Reasonable restrictions का concept है. Okay. So how do we strike a balance? It's you create an imbalance, then we have courts to create that balance, right? Individual will never. There's always a continuous strife between absolute freedom and regulated freedom. Rights and duties का हमेशा आपस में झगड़ा चला रहा है. Rights कहते हैं हम कुछ नहीं मानेंगे, duties कहते हैं no, you have to. Right? इसीलिए fundamental duties 51A, 51 alpha एक चैप्टर डाल दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. So बाकी I'll hand over to Dr. Anand for more academic light on this. हो गया आंसर? यस। आई थिंक मीडिया का भी आपने कुछ मीडिया ट्रायल कर है ना? आई आस्क सेंसरशिप। तो आई थिंक ये जो असल है मीडिया, अभी जो बहुत रिसेंटली मीडिया ट्रायल का हम जिक्र करते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, तो मीडिया ट्रायल भी एक ओवरटेक ही कर रहा है चीज़ों को जो एक्चुअल सेंस में नहीं करनी होती है, फैक्ट्स को मोल्ड कर देना, या जैसे अभी एक गुड़गांव के स्कूल का बच्चा का एक मर्डर हुआ था, मीडिया ने इतना हाईलाइट कर दिया कि वो ड्राइवर इन्वॉल्व था या वो स्टूडेंट इन्वॉल्व था, कौन था, लेकिन वो बाद में जब चला ट्रायल तो कोई और ही था। तो उससे क्या है, सुशांत राजपूत का केस है, बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस भी आप रेगुलर बेसिस सोशल मीडिया पे। तो मीडिया ट्रायल में रिस्ट्रिक्शन तो होनी चाहिए, जबकि हमारे कुछ लॉज हैं, ब्रॉडकास्टिंग का है, प्रसार भारती का है, फिर उसमें हम जहाँ पे आप कहेंगे कि फंडामेंटल फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्रेशन, बट अटैच्ड विद दैट भी है लिमिटेशंस आल्सो, लाइक रीजनेबिलिटी तो एवरीवेयर लाइज के भाई आप कितने हद तक जो है उसके अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने राइट को लेकर के और राइट टू एक्सप्रेशन को लेकर के। तो मीडिया ट्रायल शुड बी लाइक दैट इट शुड नॉट वायलेट द jurisdiction of the concerned authorities, like जो काम जुडिशरी का वो जुडिशरी करे, और जो लॉयर का काम है वो लॉयर करे, जो पुलिस का काम है पुलिस। हाँ, मीडिया उसको प्रेजेंट करे, बट नाइसली प्रेजेंट करे, उसको बहुत ज़्यादा एक्सैजरेट करके ना करे। ये मतलब इसका एक ये जो भी हम आज डिस्कशन कर रहे हैं विद दिस सेमिनार, आई थिंक देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड और a kind of straight answer to this. This is all correlated with variety of things. The human mind, how reacts, how we think, what our society says, what is the exact procedure is there. So we have to collaborate or coordinate with each and every factor in the society. एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, एक सिस्टम को बनाने के लिए मुझे लगता सबका ही इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। So panelists, we have another question from one of our students, please. Yes, तो जैसा कि आपका टॉपिक क्रिमिनल लॉयर्स के ऊपर था, तो मैं एक लॉयर से मिला था रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एंड उन्होंने कहा कि क्रिमिनल लॉयर्स क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ मिलते हैं और क्योंकि क्रिमिनल केसेस पे डील करते हैं, तो उनके साथ रहकर उनको हैबिट आ जाती है, जैसे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की। 90% ऑफ द लॉयर्स मतलब इसमें एंगेज हो जाते हैं। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है, और आप हमें मतलब किस तरीके से एडवाइस देना चाहते हो फॉर आवर फ्यूचर? देखिए, हैबिट कैसे आती है? हैबिट तो घर में भी आ सकती है, नेबर से भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। अब वो क्रिमिनल आपका तो कहना है उसने ये क्यों सिखाया आपको, जो मर्डर करके आया तो आपको मर्डर करना सिखा देगा।
you are living accused, रोज आपको मिलना है, रोज नए लोगों से आपको मर्डर करने वाला है, आपको रेपिस्ट आ रहा है, जेल में आप होंगे, आपने जगह आपके बगैर कोई कर रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, अपने पर डिपेंड है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लोग आपके पास टूल है क्या, कोई मशीन थोड़ी है आपके पास, आपकी चाबी मेरे पास हो, मैं आपको चलाऊँ, कोई भी किसी का नहीं, आप टॉय नहीं है, आप ह्यूमन बीइंग है, यू रन द व्हीकल। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्रिमिनल लॉयर बहुत अच्छा होता है, पुलिस में डरती है उससे। So we have our timeline expert opinion. If anyone else has a question, okay, we have it. Good evening, panelists. My name is Vashishta. So, in today's world, commercialization, commercials, and I request all the audience to please keep a moment of silence, please. Yes, fully Darshan. Yeah. So in today's world, media and commercials, they are playing a vital role. Be it teenagers, be it adults, be it senior citizens. So commercialization and ethics are not just problematic in some ways, but also they present a antiquated set of values with each commercial or each post on Instagram, as most of the teenagers are on that. So the main question is that how can this problem be resolved so that the wrong information or the wrong perception the people are getting, they cannot get that. So what is the main thing that can be, how can this issue be resolved? देखिए सबसे पहले हम थोड़ा उल्टा चलते हैं कि हम लॉयर्स हैं। You find number of newsletters, legal newsletters. You find number of legal informations. But there is a disclaimer at the end of the newsletter or at the end of the advice given by the lawyer. Because the facts may be different of any matter, and on the basis of the opinion given by you, if somebody go for litigation or he can get the losses, then he can also file a compulsory suit against you. तो पहली बात तो ये हुई कि जब लॉयर्स ही रहते हैं कि कहीं कोई हमारे से कंपल्सरी क्लेम ना कर ले, इसलिए वो अपनी एडवाइस को भी डिस्क्लेमर के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो जितनी भी एड्स भी आती हैं टीवी पे भी देखते हैं आप, वहाँ पर भी डिस्क्लेमर आता है, वो बड़ी फास्ट स्पीड पे बोलते हैं कि ये हमारी कोई गारंटी नहीं है, आप कुछ देखें, आप उसको ध्यान से सुनें, डिस्क्लेमर देयर। कोई बात इंस्टा पे यदि कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको कोई लॉस हो सकता है, यस यू कैन फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। आपके पास तो राइट है कि उसकी गलत इंफॉर्मेशन के कारण से आपने कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इससे बचने के लिए इवन टीवी एड्स के अंदर सभी के अंदर डिस्क्लेमर बड़ी स्पीड से बोला जाता है, लेकिन बोलते तो ये कानून कहीं किसी को माफ नहीं करता, फिर भी जो वायलेशन करते हैं तो उसका तो हर जगह बोलना पड़ता है। तो वे कहने का मतलब लॉस। I just add something on this. लीजिए आप प्लीज, आप लोगों की जिम्मेदारी अभी हम आपके नाम पूछ के आपके ग्रुप बना देंगे और उसमें जिम्मेदारी दे देंगे, आप ये करेंगे। ओके, सुन लीजिए अध्यक्ष, ये जो सर ने कहा तो बहुत अच्छी बात है कि कंसेप्ट है। एक और चीज जो इम्प्लीमेंट करने के काबिल है, जो आप सब अपने अपने लेवल पर कर सकते हैं, करना चाहिए। जो पढ़ाई लिखाई, जो टैक्स मैन है, जो बेचारा खेत में काम कर रहा है, वो टैक्स देके ये सब हमारी सुविधाएं तैयार कर रहा है, उसको उसका फायदा होना चाहिए। कैसे हो एक हमारे टाइम में एक मोहल्ला कमेटीज बना करती है। कोई भी जनरल पब्लिक को आपके मोहल्ले में, आपकी लोकेलिटी में कोई भी चीज परेशान करती है, फॉर इंस्टेंस कुछ लोगों को लाउड स्पीकर लगा करके बड़ी जोर से कोई अनाउंसमेंट, भजन कीर्तन करना है या कुछ भी करना, बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, आपकी पढ़ाइयाँ हो रही हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको डिस्टर्बेंस हो, तो देयर यूज्ड टू बी स्मॉल कमेटीज, जो रिस्पेक्टेबल लोग थे, जो एक्टिव लोग थे मोहल्ले के, उनकी एक छोटी कमेटी बना दी जाती थी, मोहल्ले वाले को एक्टिव बनाना। और आपको परेशानी हो रहा है, कोई एग्जाम आ रहा है, यू बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय समबडी, किसी की शादी में बिजी चल रहा है, आप उस अपनी कमेटी को बताते थे कि भाई हमारे एग्जाम्स हैं और इसको बंद करवाइए। सो देन दैट कमेटी विल अप्रोच द लोकल अथॉरिटीज और उनको बंद करवाएं। सिमिलरली जो चीज आपको, सपोज कोई ऐड है आपको अच्छा नहीं लगता है,
टीवी पर आ रहा है देखने में, आप परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते उसे, या वैसे ही उसका कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके दिमाग पर पड़ रहा है, तो आप अब आप अपने लेवल पर तो नहीं कर सकते, लेकिन मिलकर कर सकते हैं। Like we all try to understand. You can get together, एक छोटा ग्रुप, एक कमेटी बना सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं उसे, दक्षिता कमेटी, दक्षिता कमेटी, सो और शाइना कमेटी, सो और वो कमेटी क्या करेगी, आप उन्हें बता देंगे एंड दे विल पुट देयर हेड्स टुगेदर, और जो भी लोकल अथॉरिटी उसे इन्फॉर्म करेंगे, देयर वुमेन्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स हैं, और बहुत सारी चीजें, राइट। उन्हें कहना देखिए हमें इससे परेशानी हो रही है, प्लीज फाइंड आउट इसका, स्टॉप इट, जैसे भैया, और उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा और शांत चुप नहीं करना है। दैट इज व्हाई आई सेड आप हर एक इंस्टीट्यूशन है, यू नॉट इंडिविजुअल का टाइम खत्म हो गया द डे यू ज्वाइंड लॉ, यू एंटर्ड एन इंस्टीट्यूशन जहां पर आप एक एस्टैब्लिशमेंट करेंगे, आपके ऊपर बहुत से दुनिया विश्वास करेगी, लोगों को आप रिलीफ करेंगे, ओके। सो स्टार्ट डूइंग इट, लेट द चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम। जो चीज आपको परेशान कर रही है सबसे पहले उसी के इलाज कीजिए। ईव टीजिंग है, आपको रात को बाहर निकलना मुश्किल होता है, चार खड़े हैं, बंदे खड़े हैं, कोई भी है, आप नहीं जा पाते, आपकी अम्मा नहीं जा पाती, आपके बूढ़े पिताजी नहीं जा पाते, सो गेट आउट ऑफ दैट स्मॉल कमेटी, बताइए ये सब बदमाशी हो रही है, पुलिस है नहीं सुनती है, बदतमीजी करती है पुलिस, कमेटी है ना आपके पास, गो टू द नेक्स्ट हायर ऑफिसर, गो टू द कोर्ट, मस्ट स्टार्ट डूइंग इट। बैठ के नहीं, किताबें पढ़ के नहीं होगा, अकेला लाइब्रेरी में वक्त बिताने से नहीं होगा, you have to be alert, go out, right? Thank you sir. प्रोडक्ट्स हमारे हैं, उस प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आप पैकेजिंग भी करते हैं, पैकेजिंग में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है, द वे प्रिस्क्राइब्ड बाय द लीगल अंडर द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, तो उसके ऊपर भी चलान है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ऑल डायरेक्टर्स आर पनिश्ड विद द सिमिलर पेनल्टी अलोंग विद द कंपनी। सपोज 4 डायरेक्टर्स आर देयर एंड वन इज द कंपनी, तो 5 पेनल्टी विल बी देयर, 50,000 ईच, टोटल 50,000 पेनल्टी। कंफ्यूजिंग कोई भी यदि आप ऐड देते हैं तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री काम कर रही है, साथ में एक AISR के नाम से एक कंपनी बनी हुई है बॉम्बे के अंदर, दैट इज रजिस्टर्ड विद द कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री। दे इशू द नोटिस एंड गिव ए चांस टू यू, हियर टू यू, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स प्रोवाइड बाय यू दे इम्पोज द पेनल्टी। वो ऐसा भी एक बॉम्बे में कंपनी काम कर रही है। लीगल मेट्रोलॉजी में तो आपको तुरंत मिलेगा। Companies are also required to get registered under the Legal Metrology Act if they nominate one director. In that case, the company will get the penalty only one in the name of the one director and the company. So, Legal Metrology watch कर रही है क्या पैकेज की इंफॉर्मेशन है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और क्या MRP है कि नहीं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं, डेट ऑफ एक्सपायरी है कि नहीं। FSSAI के लॉज अलग हैं, ये लॉज अलग हैं। Thank you sir. Hello sir, I'm Rishma from Maharashtra of the same. I want to ask one question that as sir said कि law अपने आप में बहुत बड़ी चीज है and lawyer अपने आप में एक बहुत बड़ा word है. तो why I'm from first semester. 1 week ago I started my law and मैंने इस 1 week में इतनी बार सुन लिया that lawyer को हम social engineer बोल रहे हैं, social doctor बोल रहे हैं. Isn't it a sense of bias कि हम lawyer को lawyer नहीं बोलते हैं, हम डॉक्टर को मेडिकल लॉयर नहीं बोलते हैं ना, तो हम लॉयर का यूज ही नहीं करते हैं। मैंने लिखने में बहुत जगह देखा है दैट सोशल इंजीनियर, सोशल डॉक्टर, सो व्हाई आर वी यूजिंग दिस? नॉट ओनली क्रिमिनल लॉयर्स बट एवरी लॉयर आई गेस इज मतलब बायस बहुत होता है लॉयर्स के साथ, तो व्हाई इज इट सो? ऑडियंस प्लीज मेंटेन साइलेंस इन द ऑडिटोरियम, थैंक यू। In the field of the law, there are variety of the work. It depends on the work. If you are, what are you doing? The people say like that. Suppose a lawyer is practicing corporate law, so the people say he is a corporate advisor. The word automatically adds corporate advisor with the lawyer because what he is doing, he is providing the legal corporate advice. Therefore, he is a corporate advisor. Suppose a lawyer is working with the NGO, then what type of services they are providing? They are providing the social services. तो सोशल एक्टिविटी हो सकते हैं और लाइकली जैसे अभी जो कॉस्ट कमिटीज बन रही हैं, तो वन मेंबर फ्रॉम द एनजीओ और वन लॉयर who have
knowledge about the cost. That also be one of the member of the cost committee. So वो है तो depends on एक lawyer को lawyer क्यों कहेंगे? If an advocate is practicing with the court, certainly he is called with a name, single name lawyer. But he is not practicing with a court and he is working with a company as a lawyer, then he is not a lawyer, practicing lawyer. He is not registered with the Bar Council of India, Bar Council of Delhi. He has to hold his membership. So now what is he doing there? Deputy General Manager Legal. Manager Legal. It is not a designation. Can you all please maintain silence? What the lawyer, after passing the degree of the LLB, what you are doing, so the basis of that you will get the name what you want. If you really want a lawyer, then practice in the High Court, District Court, or thank you. Thank you, panelists, for clarifying and imparting additional information. Additional information to the audience. Now I would like to invite Dr. Director Sir to the stage to present the memorandum to our esteemed panelists. Guys, can we have a round of applause and please attention? Professor Dr. Anu, please everyone take a round of applause. आगे जाके खींचना. Followed by Dr. A.K. Vashishta. A round of applause everyone. Now we have Sir Dr. B.M. Jyotishi. Everyone. We are really thankful to all three of our panelists.